ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम जनादेश। इसके अंतर्गत सुनिए नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के परिणामों की विस्तृत समीक्षा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ केवी प्रसाद और पूर्वोत्तर भारत से विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार और आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी और उमेश चतुर्वेदी। नमस्कार, जनादेश कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ दिल्ली स्टूडियो में विशेषज्ञों के साथ साथ हम त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। जैसा कि हम सुबह से ही नजर रख रहे हैं, त्रिपुरा और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने सत्ता बरकरार रखी है और जहां भाजपा आईपीएफटी ने त्रिपुरा में बहुमत हासिल किया है, वहीं एनडीपीपी और भाजपा ने नागालैंड में बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। लेकिन नागालैंड और त्रिपुरा की स्थिति तो पहले से ही काफी स्पष्ट लग रही थी, लेकिन मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के कयास थे और स्थिति अभी भी कुछ ऐसी है। लेकिन अगर हम शुरू से देखें इन विधानसभा चुनावों के बारे में, तो हमने मतदान का प्रतिशत देखा, बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत था और निर्वाचन आयोग ने इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत की और तीनों राज्यों ने बड़े शानदार तरीके से लोकतंत्र के इस उत्सव में अपनी हिस्सेदारी निभाई। जनादेश के मायने हर राज्य में अपनी समस्या, अपनी चुनौती के आधार बनते हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचे से जुड़ी हुई बातें हों। Yes, Chandrika, and it is also very significant that the Prime Minister, who himself, led from the front by undertaking road shows, rallies in northeastern states, his promise was for peace, development and economic growth. So these are very, very important factors, and considering the fact that since 2018 BJP-led alliances have ruled northeastern states, all the seven sisters, plus and so the track record of BJP and aspirations of youth, as Prime Minister often refers to this, that youth is very aspirational, very ambitious. They want the government to perform, and this evening also at BJP headquarters he mentioned these factors. मिस्टर प्रसाद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये भाजपा ने राज्यों में, और चाहे वो उनके राज्य प्रभारी हों या, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पहले ही जैसे पूर्वोत्तर के बुनियादी ढांचे और प्रधानमंत्री का जैसे एक पूर्वोत्तर के लिए विशेष लगाव रहा है, तो उस लगाव को देखते हुए उन्होंने वहां बुनियादी ढांचे में, चाहे वो सड़क संपर्क हो, रेल संपर्क हो, उड़ान योजना हो, बुनकर और जो क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट है, हर किसी को बढ़ावा दिया। तो शायद कहीं उसी का ही कुछ ऐसा परिणाम आप देखते हैं कि लोगों की जनता, वहां की जनता ने उनका स्वागत किया है। जी बिल्कुल। देखिए, लोगों को क्या चाहिए, सरकार पे अपेक्षा रहती है कि सरकार हमारे लिए काम करे और हमारे जीवन का उद्धार करे और उस तरह की सुविधाएं दे, मूलभूत सुविधाएं जो हर नागरिक का अधिकार है। तो उसमें प्रधानमंत्री जी का जो पूरा, जिसे कहते हैं, फोकस रहा है, और डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डोनर जब बनाया तो उसका मकसद यही था कि पूरी तरह से एक अटेंशन दिया जाए और वहां की जो समस्या है उस पर समाधान करें। और साथ ही साथ देखिए, केंद्र की तरफ से बड़े मंत्रियों को जिम्मा दिया गया कि जाके अलग अलग पूर्वोत्तर राज्य में आप अपने आप को जाएं, वक्त जाएं और लोगों की समस्याएं समझें और उसका समाधान ढूंढें और समाधान ढूंढ के केंद्र में आइए, ताकि केंद्र की सरकार है, केंद्र में काफी पहल करे। जी, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हम कोहिमा चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मेनो सेले योशु हैं जो कोहिमा से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। यस मिस्टर होशु। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। आप लेटेस्ट सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं सर? यस, with the results of the general elections being completed by this evening, there is much hype that the BJP, along with the regional party of Nagaland, that is the Nationalist Democratic Progressive Party, will form the government again with Mr. Tripura as the chief minister. They have the comfortable majority to form the government in the 60th assembly. That numbers up to 37 MLAs to form the government. So, Mr. Shu, what would you say tilted the scales in favor of
NDPP and BJP. What were the issues dominating the political landscape just before elections, and how did the campaign go? What were the highlights? Well, the reasons that BJP and NDPP could perform quite well in this assembly polls would be reasonably because they have a pre-poll alliance that have hammered the confidence of the people that they will continue to form the government even after the poll. That's one very strong message that have been sent to the electorates, that electing them to power will bring them more stable government, as well as with Narendra Modi's government in power at the central government. They have raised the expectations of the Nagas, in particular that Nagaland will be elevated and will progress in power with the mainland states. Mr. Joshi, just a question. Before the elections, there was an issue of EPFO, of course, the Home Ministry and other people came into play. But how do you see that as a political question being accommodated or being looked at once the new government comes in power? That, interestingly, is one political development that have created a lot of tension with regard to conduct of the polls in Nagaland. The people of the Eastern Nagaland Public Organization, there is a group of several tribals who are considered to be a little marginalized comparing to the other Naga tribes. So they have hesitated to join or have to participate in the forthcoming, that was in the election, reasonably because on the grounds of lack of infrastructure, lack of administrative machineries and other developmental amenities that are lacking in the Eastern Nagaland area. So that is the reason that they have refused to participate. But with the intervention of the central government through the Ministry of Home Affairs, they were given the confidence that after the polls, that the government will initiate befitting measures, possibly special economic packages or political or administrative, different political or administrative arrangements for them. That's the expectation. हमारे साथ अगरतला से संजीव देव जी भी हैं। संजीव जी सुन पा रहे हैं हमें? यस। संजीव जी, त्रिपुरा में के जो नतीजे रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभी? देखिए, त्रिपुरा में जो इलेक्शन शुरू हुआ तब क्वेश्चन सामने आया क्या बीजेपी फिर आएगा और कांग्रेस सीपीएम जो अलायंस बनाया वो आएगा। लेकिन अभी जो नतीजा अभी मिला उससे एक क्लियर है, पीपल हैज गिवन ए क्लियर वर्डिक्ट टू बीजेपी गवर्नमेंट टू रन फॉर अनदर टर्म, एंड कांग्रेस एंड सीपीआईएम जो अलायंस बना वो तो मिजरेबली फेल किया, दे कुड नॉट गो इवन nearer to the capturing power. But one notable feature is that the emergence of a new force, the Tripura Motha, yes, led by the former royal scion Pradyut Vikram Kishore. They have won a good number of seats, and they are going to be a major factor in the Tripura politics. But they are aspiring to be a controlling factor if there is any hung assembly. As the BJP has got a clear majority, so there could not be in a diverse seat, this Tripura Motha. So it is a setback for Tripura Motha and this chairman. संजीव जी, आपको रोकते हैं। हमारे साथ शिलोंग से मानस दास भी हैं। मानस जी, हमें सुन पा रहे हैं? जी जी। मानस जी, प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने आज जो एक स्पीच दी है, थैंक्स स्पीच, उसमें एक बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है और बड़ी भावुक बात भी है कि नॉर्थ ईस्ट अब दिल्ली से भी दूर नहीं है और दिल से भी दूर नहीं है। जी, तो ये मेघालय में क्या दिल्ली से दूरी और दिल से दूरी कहीं खत्म होती नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल नजर आ रही है, खत्म होती है। अब मेघालय के जो वर्डिक्ट है इसमें तो ये सीधा साधा यही साबित हो रहा है कि लोगों ने जो गवर्नमेंट थी, सरकार, उसी को बरकरार रखने के लिए वोट डाले अपने। सो दिल्ली से जो कनेक्शन है उसको भी और थोड़ा सा मजबूती मिली।
जी, पहले क्या होता था कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, और अभी भी होता है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में जो भी सरकार चाहे जिस भी पार्टी की हो, सेंटर से एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखती है। हाँ जी। मेघालय में इसका जो कमिंग गवर्नमेंट है उस पर असर दिखेगा? हाँ, बिल्कुल दिखेगा। देखिए, मेघालय में जो गवर्नमेंट अभी बनने जा रही है, ये लगभग जो गवर्नमेंट थी वही गवर्नमेंट को फिर से दोबारा लोगों ने चुना। ये एनपीपी, यूडीपी एंड बीजेपी। अब कल तक गवर्नमेंट का यहाँ क्या स्वरूप होगी ये तो पता नहीं है, लेकिन जो एनपीपी है, जो उभर कर आई है सबसे बड़ी पार्टी बनकर पार्टी के नाते से, एनपीपी ऑलरेडी एनडीए के हिस्सा है, तो यहाँ पे बिल्कुल विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट both have been working in tandem. So it is the same arrangement which the people have chosen. Manas ji, in Meghalaya, there are a lot of parties from Bihar origin has been contested. What do you say about it? From what origin? Sorry. Bihar, like Lok Janshakti Party, Janata Dal U, and RPI also get 2 seats. Yes. You see, this is nothing new. Bihar parties have contested elections even years ago. RJD was, contestant here. Mr. Ramvilas Paswan himself had come to campaign many years ago, I remember. So they get their own pocket votes. And Manish, Congress and Trinamool Congress have also made their inroads. Particularly TMC has won 5 seats, and while the new party, the Voice of the People Party, has bagged 4. So what is the the message people will get from this? Trinamool Congress, it's a happy occasion for them. They have managed to win. In their maiden attempt in Meghalaya, they have managed to win 5 seats, and Mamata Banerjee has been very keen to make inroads in Northeast. Right. You see, there is, although it's sort of a status quo if you see the results, but there is always a section and always a section which aspires for change. So that is the section which perhaps actually, and mostly the youth, voted for the new party which is newly formed, VPP, which has done exceptionally well by winning 4 seats. And Trinamool Congress, of course, it was led by very dynamic leaders here. It could not garner as many seats as it thought it would have. But then, the leaders were dynamic. Former Chief Minister Mukul Sangma led the party. So, the former Chief Minister Mukul Sangma, who's in the outgoing government, is the outgoing assembly, is the leader of opposition, has his own individual field. So here, if people have voted for the Trinamool Congress as such for its ideology, or people have voted for Mukul Sangma and the individuals, that is to be seen, because you will see another very popular leader, George B. Lingdo, lost the elections from the TMC. प्रसाद जी, इस बार के चुनाव में एक रिकॉर्ड टूटा है, खासतौर पर नागालैंड में। वहां जब से विधानसभा बनी है कोई विधायक महिला नहीं होती थी। इस बार 2 विधायक चुन करके आई हैं। और अतीत में कुछ साल पहले जब वहां लोकल बॉडीज के में 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी, तो वहां के पुरुष मतदाता सड़कों पर उतर आए थे। इस माहौल में यह जीत क्या कहती है? उमेश जी, वाकई बहुत सराहनीय कदम एनडीपीपी ने उठाया कि जब इतने उन्होंने महिलाओं को सीटें आरक्षण दिया। और खासकर देखें, अभी कुछ इसमें थोड़ा सा अगर संज्ञान में लिया जाए, नागा पीस अकॉर्ड, नागा में जो शांति की जो वार्ता चल रही थी, उससे पहले नागा मदर्स का एक बहुत बड़ा वहां पे एक पूरा प्रभाव रहा है कि नागा के अलग अलग समुदायों को बिठाकर बात करके कि हम शांति के राह पे चलें। तो वहां से लेकर अगर 25 साल बाद अगर हम ये देख रहे हैं कि आज नागा के जो महिला समुदाय के लोग हैं, वो आज प्रशासन में ना से सीधा लेकिन वहां के असेंबली में, वहां के
सचिवालय के मेन स्ट्रीम में पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में आए तो उनका स्वर जब उठेगा तो लोग ध्यान से सुनेंगे। और भारत वैसे भी पुरुष प्रधान कहा जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए कोई ना कोई देखिए, हमारे जो हमारी मिट्टी है ना, हमारे आत्मा है, उसमें कुछ न कुछ तो ऐसा रहा है। क्योंकि देखिए, आपको याद होगा पेट्रोलियम सेक्रेटरी रहे आर.एस. पांडे, उसके पहले वो नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी थे, और इंसर्जेंसी के दौर में भी उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और अस्पताल, जो प्राथमिक अस्पताल हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और बिजली के बिल वसूली में लोकल लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा चेंज ला दिया था। तो कहीं न कहीं उसका भी इम्प्लीकेशंस है। देखिए, बिना स्थानीय सहयोग या कोई सरकार काम नहीं कर पाएगी, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो। महिलाओं का रोल हमेशा अग्रसर रहा है, लेकिन हम उसको चाहे माने ना माने, अब वो राजनीतिक दौर पे उनकी जो है, और खासकर केंद्र में कमिटमेंट रही। देखिए, पहली बारी हुआ है 2000 जो हमारे 19 के चुनाव है, इतने सारे महिला हमारे एमपी चुन के आए। तो ये धीमे धीमे परिवर्तन होगा। सामाजिक परिवर्तन कोई रातों रात तो नहीं होता, उसके लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है और धीमे धीमे रास्ता खोलता है। बिल्कुल। हम अभी चलते हैं अगरतला, हमारे साथ संजीव देव हैं वहां से। थोड़ी सी जानकारी हम ये चाहेंगे कि लेफ्ट और कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे। जो लेफ्ट का गढ़ कहा जाता था त्रिपुरा, अब एकदम से वहां पर उसकी उपस्थिति दिखाई नहीं देती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो आर्च राइवल्स थे। पहले से ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई किया। दिस टाइम दिस बोथ केम इन अलायंस टू डिफीट द बीजेपी, but the election results, it appears that people has not accepted that alliance, and even in the ground level, the BJP and the CPM and Congress leaders, they have formed the alliance, but in the ground level, their workers has not accepted it. That's why they have rejected them, and they could not make any impact. Both of them have own 14 seats. Earlier, CPM alone had 16 seats. So they have not got the validity. They did not get the people's support. That is the position of this alliance now, and they are not in a very comfortable position now. अच्छा, एक बात बताइए कि जो त्रिपुरा मोथा पार्टी है, जो शाही नेतृत्व है उस पार्टी का, लोगों की भावनाएं उससे बहुत जुड़ी हुई हैं, तो क्या लगता है कि लोगों को आशाएं बहुत ज्यादा थी, या पार्टी को बहुत ज्यादा आशा थी और उसके आशा अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहा है, या पहली बार एक चुनाव लड़ने वाली पार्टी के लिए ये जीत मायने रखती है। देखिए, जो त्रिपुरा मोथा पार्टी तो रॉयल फैमिली से पार्टी का जन्म हुआ, राजबाड़ी में जन्म हुआ पार्टी का। तो सब जो राजा के प्रति ट्राइबल का एक बहुत सिंपैथी है, लगाव है, इमोशनल इशू। That Tripura Motha become an emotional issue, and all the tribal people run after them. They have assembled behind this Tripura Motha. But in the ultimate, we have seen that they could not garner that much of support they are expecting. They got. But this was the first time they contested, so I think this is a good performance. Good performance. Yeah. The problem is this: BJP has got the majority alone. That's why they were expecting that there will be a hung assembly, and then there will be the kingmaker. But now the situation is this: BJP has got majority on its own, so they are not in a position to handle the things. And Mr. Dev, a very quick question. You think that BJP changed its chief minister and brought in Manik Saha, not a very high-profile name, and you think this also made a difference in BJP's electoral fortunes? Yes, it has worked. Because he is a fresh face and very known as a Mr. Clean. His image is there. That's why. And after becoming chief minister, he has taken some steps
so that the law and order maintains in a good law and order is maintained in the state. Such a kind of steps has got a good impact among the people. So this change in the face is a very effective step it was. And after this change, the central projects. संजीव जी, हमारे साथ केवी प्रसाद जी हैं. प्रसाद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि त्रिपुरा में दूसरी बार लगातार वामपंथी दलों को, इस बार तो कांग्रेस भी साथ थी, भारतीय जनता पार्टी ने शिकस्त दी है, हराया है. और आप एक चीज देखेंगे ये कि भारतीय जनता पार्टी 2017 के पहले तक जिसको भी हराई है वो अकेली सिर्फ कांग्रेस को, बाकी आप देखेंगे कि रीजनल पार्टीज को या वामपंथी दल को नहीं हरा पाती है. और ऐसा लगता है कि 2017 में वो समाजवादी पार्टी को हराती है उत्तर प्रदेश में, और 2018 में त्रिपुरा में वामपंथी दल को हराती है, और उसके बाद वो पैन इंडियन पार्टी बनने लगती है. आज स्थिति यह है कि इन चुनाव नतीजों के बाद 49.3% जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है. क्या कहना चाहेंगे आप इसको? उमेश जी, 2019 का चुनाव देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कुल मत प्रतिशत था वो तकरीबन उतना ही है जितना आप बता रहे हैं, करीब 50% के आस पहुंच गया था. तो इसमें और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता मुझे, वो फीसदी के मामले में करें. सवाल तो ये है कि उत्तर पूर्व राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जो पैठ 2014 से बढ़ती है वो लगातार बढ़ रही है, और वो एक तरह से स्थायी रूप में दिख रहे. तो वो एक उसका अंतर मैं समझता हूँ. भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी के स्तर पे और वो अपना फैलाव कर रही है, तो उस तरह से उनको मेरे ख्याल से कोई उस तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है. तो एक ये महत्वपूर्ण बात है. ये राष्ट्रीय राजनीति में, क्योंकि अब तो इस साल तो एक वैसे भी कर्नाटक में चुनाव है और राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो ये 4 बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव है. उसके बाद लोकसभा का चुनाव है. इन 3 नतीजों से क्या असर पड़ेगा राष्ट्रीय राजनीति पर? उमेश जी, मेरा अपना मानना है, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिएंगे, कभी भी राष्ट्रीय चुनाव जो लड़ा जाता है, केंद्र की सरकार के मुद्दे अलग होते हैं और स्थानीय चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं. जब हम प्रांतों में चुनाव लड़ते हैं वहां के मुद्दे अलग होते हैं, तो इसमें बड़ा फर्क होता है. बट पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ बीजेपी कंटिन्यूज. That will remain because today BJP is on the pole position in the political country. I mean, as a main political party, as I said, 2019 they got almost 50% of votes in this country. देखिए, राज्य की जनता भी ये समझती है ना कि केंद्र से उसको सहयोग मिलता रहेगा, तो उसकी जो योजनाएं हैं वो वहां फलीभूत हो सकती हैं. उसमें चंद्रिका जी, 2 फर्क है. फर्क ये है कि ऐसे राज्य जिसमें 90% केंद्र का पैसा जाता है, और वो राज्य जो अपने जो हम दिल्ली के आसपास जो राज्य बने हैं उसमें आप देखिए, पंजाब में आपने, तो ये फर्क थोड़ा जनता का विवेक पे कोई फर्क मत समझिए. जो मतदाता है उसका विवेक का परिचय हर टाइम और वैसे एक चीज देखिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा में 1 सेकंड, त्रिपुरा में 51 सीटों पर लीड की थी भारतीय जनता पार्टी, और उसके कंपैरिजन में देखिए तो विधानसभा में उसकी सीटें घट रही हैं. फिर वही जो मेरी बात जो मैंने आपको कही वही है ना कि केंद्र के चुनाव में और राज्यों के चुनाव में थोड़ा फर्क होता है. तो हम अब यहाँ से कोहिमा चलते हैं. Yes, we'll go to the Kohima to talk to our correspondent, Mr. Hoshu. Mr. Hoshu, now the next question which comes to mind is that the focus used to be on the peace process. How it is weighing on the minds of the people in Nagaland, and there is also reports here in Delhi said that the Naga youth are very concerned about lack of jobs in government sector. So what do you think is government sector jobs are not forthcoming in greater volumes? Is private sector investment in some areas in infrastructure or in agriculture, forestry, is it coming forth? Well, for quite a few years, Nagaland is experiencing relative peace, of course. And coming back to the issues that you have raised, no doubt that Nagaland have a huge unemployment issue, and that's one of the biggest issue which the parties also have highlighted in their party manifestos. Mm-hmm.
the government, what through the Chief Minister, the present Chief Minister, if you will, what he have campaigned and raised issues during many of his campaign releases, that he is trying to, his government, if voted to power, they will try to focus on youth empowerment through sports, music, ecotourism, fashion, and those things that can be of employment avenues for the upcoming youths of Nagaland, besides the government as the largest employment agency in the state. So that's what those are the avenues which the youth are looking forward to. Yes, thank you. यानी कह सकते हैं कि शांति और विकास का जो भाजपा का एजेंडा है उसको राज्य ने स्वीकार किया है अपने तरीके से। और दूसरा एक और बात है चंद्रिका जी कि अगर देखें हम तो यहाँ पे नागालैंड और मेघालय दोनों में बहुत म्यूजिक के प्रति, ये टूरिज्म के प्रति उनका कल्चर थोड़ा सा बहुत वाइब्रेंट है इस हिसाब से। और ये बुनियादी सेवाओं का जो विस्तार हुआ है, जैसे सड़क संपर्क है, रेल संपर्क है, हवाई संपर्क है, ये सब बढ़ने से संस्कृति का फैलाव और फिर वहां कई तरह की योजनाएं जो लागू की गई हैं, मुझे लगता है उसका यूथ पर भी एक असर पड़ा है, क्योंकि बड़ी संख्या में युवा मतदाता भी बाहर निकल के आए। If I have a question for Mr. Manoj Das, one issue that we were looking at is the party of Mr. Sangma, having been in alliance with the BJP, they broke ranks, they've contested separately, and of course they are now again quite possible they may start working together. But how does this play out among the people? Because end of the day, the government was one, they've contested against each other, had for each other, they had their issues. So how do you reconcile this issue now? The issue between the BJP and the NPP? Absolutely. Okay, the Chief Minister, Conrad Sangma himself, has been very clear and lucid in this regard. He said that, well, during election times, we go to the people with our own issues. He said in, as many terms. And then, in the interest of the people, and interest of stability, a government has to be formed. But what he said is that during elections, every political party has its own right to go to the people with its own agenda, despite having been in a coalition. So that way, I think it wouldn't affect very much. Do they still need the BJP because UDP and NPP would have enough comfortable majority in the House? Yeah, that is the interesting thing that has come out of these elections, because the UDP and NPP themselves can form very comfortably a government. But whether now the question of the BJP is a big one, we will probably get to know about it in the days to come, very soon, tomorrow or day after. Again, Conrad Sangma, who is seen to be the most favored chief minister once again, had also made it clear that he was open, his party rather, open to coalition with anybody. With anybody in the sense, when he was asked by reporters very recently that what about the BJP? Would you go for an alliance with the BJP after so much of mudslinging on the issue of corruption? Conrad said, okay, fine, this happens in politics, but we will see what is in the best interest of the people. And may I just add one line? You will see in the northeastern states, which have very little say in the parliament, with very little seats, traditionally always aligned with the center, or the party at power at the center. तो इसके साथ ही 2023 में जो पहले विधानसभा चुनाव हुए हैं, उनका ये विशेष 3 राज्यों का जो चुनाव हुआ, उनका ये विशेष जनादेश कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपने सभी साथियों, अपनी तकनीकी टीम के साथ हम विदा लेते हैं। नमस्कार। कार्यक्रम जनादेश के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के परिणामों की विस्तृत समीक्षा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विशेषज्ञ केवी प्रसाद और पूर्वोत्तर भारत से विभिन्न राजनीतिक विशेषज्ञ।
कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार विनय कुमार और आकाशवाणी संवाददाता चंद्रिका जोशी और उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।